Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students, today we will explore the facts about the entitled theme, Scope of Psychology. Scope simply means the extent of the area or subject matter that something deals with or to which it is relevant. Dear students, in scope we study the width and range of the subject. In order to study the scope of psychology, dear students, we have to focus on various branches of psychology. The description of the various branches of psychology which denotes its scope are highlighted as under. Number 1, abnormal psychology. Dear students, abnormal psychology is that branch of pure psychology which deals to study the mental disorders or emotional disorders. For example, anxiety disorders, phobia, depression, developmental disorders, sleep disorders, mood disorders, obsessive compulsive disorders, traumatic stress disorders. जैसे कि हम सब जानते हैं, by means of one reason and second reason, the individual becomes victim of the mental disorders. It is the abnormal psychology which studies various causes of mental disorders. Dear students, cause बायोलॉजिकल भी हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर का कॉज जेनेटिक भी हो सकता है और सोशो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, जहाँ तक कि बायोलॉजिकल कॉज की बात है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द न्यूरोट्रांसमीटर्स becomes dysfunctional, it leads the individual in the psychological state, where individual particularly becomes victim of depression. What are neurotransmitters? Neurotransmitters are basically the chemical substances which carry the message from one nerve cell to the another nerve cell. हमारे ब्रेन केमिस्ट्री में neurotransmitters होते हैं, like epinephrine is the neurotransmitter, serotonin is the neurotransmitter, dopamine is the neurotransmitter. जब ये neurotransmitters dysfunctional हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली जो इंडिविजुअल है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसमें साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी आ जाती है. न्यूरोट्रांसमीटर्स को फंक्शनल बनाने के लिए ट्रीटमेंट सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, लाइक मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक थेरेपी के ज़रिए हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को फिर से यानी कि फंक्शनल बना सकते हैं. इलेक्ट्रिक शॉक पेशेंट को दिया जाता है जिससे पेशेंट की बॉडी में कन्वल्शन पैदा हो जाता है और ऑटोमेटिकली जो डिप्रेशन लेवल है वो नीचे आ जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है और इंडिविजुअल जो है वो एबनॉर्मल स्टेट से लेके नॉर्मल स्टेट तक पहुंच जाता है. जेनेटिक कॉज आई मीन टू से यू मीन्स कि व्हेन देयर इज डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी इन जीन्स, जब हमारे जीन्स में कोई डिफेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो उस वक्त भी कि चांस होते हैं एक इंडिविजुअल को एबनॉर्मल पैदा होने के. एक बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो जाता है अगर उसे जीन डिफॉर्मिटी होगी. एंड अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक कॉज देयर आर अदर प्रोमिनेंट सोशो साइकोलॉजिकल causes. Dear students, which lead an individual in the psychological state, like broken home condition is when there is dispute or tussle between the family members, especially the parents, या social conflicts है या other conflicts है, conflicts on the basis of
religion, conflicts on the basis of caste, conflicts on the basis of race, and other cultural conflicts. It is the abnormal psychology which also studies treatment like psychotherapy, like behavioral therapy. Psychotherapy के ज़रिए, behavioral therapy के ज़रिए और अदर ऑल्टरनेटिव मीन्स है जिनके ज़रिए से हम जो मेंटल डिसऑर्डर्स है या इमोशनल डिसऑर्डर्स है उनको हम ट्रीट कर सकते हैं. नंबर सेकंड, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. Dear students, developmental psychology basically studies human growth and changes across the lifespan, including physical, cognitive, social, emotional. Dear students, as we know that change is the law of nature. Everything and every element undergoes change. There is hardly any aspect or any element which does not undergoes change. As per the developmental psychology is concerned, changes takes place from infancy till old age. कौन सी चेंज आती है? यानी कि चेंज इन द फिजिकल एस्पेक्ट. एक इंडिविजुअल के फिजिकल अपीयरेंस में, फिजिकल एस्पेक्ट में चेंज आ जाती है. फिजिकल एस्पेक्ट में चेंज आना मीन्स दैट चेंज इन शेप, साइज एंड वेट. बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल ग्रोथ, चेंज आल्सो टेक्स प्लेस इन कॉग्निटिव एस्पेक्ट. जीन पियाजे ने डिस्क्राइब किया है कि एक इन्फेंट में फ्रॉम इन्फेंसी टिल टू द एडोलिसेंस पीरियड तक किस तरीके से चेंज आ जाती है उसकी थिंकिंग में. थिंकिंग इन सेंस टू थिंक ईदर डाइवर्जेंटली और कन्वर्जेंटली, या रीजन में चेंज आ जाती है. रीजन इन सेंस टू रीजन इंडक्टिवली और डिडक्टिवली, या मेमोरी में चेंज आ जाती है. मेमोरी ऑफ रिकॉल एंड मेमोरी ऑफ रिटेंशन. एंड दीज ऑल चेंजेस आर कॉल्ड द cognitive changes. Apart from it, there are the various stages of development which studies developmental psychology. For example, infancy. Infancy is the first stage which starts from the birth and remains up to the 1 year. And after the infancy, second developmental stage starts, dear students, that is known as early childhood. Early childhood is that stage which starts at the age of 1 year. और ये स्टेज कब तक रहता है? At the age of 6 years. और उसके बाद थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाता है, that is known as late childhood. Dear students, late childhood starts at the age of 6 years and it remains up to the age of 12 years. And likewise the late childhood, there is another stage which is known as adolescence stage, which starts at the age of 12 years and remains up to the age of 18 years. As we know that adolescence is the rough and tough stage. When we look through the prism of Stanley Hall, Stanley Hall is being considered the father of adolescence. Dear students, after the adolescence, there is another stage which is known as early adulthood stage, which starts at the age of 19 years and ends at the age of 40 years. Then after starts middle adulthood, which starts at the age of 40 years and remains up to the 60 years. And last stage is old age stage, which starts at the age of 65 years onwards till to the death. These are the various developmental stages. Number third, social psychology. Dear students, social psychology is that branch of psychology which studies how the group influences the individual and vice versa. It means how individual also influences the group. Dear students, as we know that when the individual comes in contact of the group,
ऑटोमेटिकली उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप. ग्रुप में भी फैमिली, आई मीन टू से यू ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स, ग्रुप में भी स्कूल, ग्रुप में भी सोसाइटी. और जब एक इंडिविजुअल सोसाइटी के कांटेक्ट में आता है या स्कूल के कांटेक्ट में आता है या फैमिली के कांटेक्ट पे आता है, और इन ऑल इंस्टीट्यूशंस का असर एक इंडिविजुअल पे पड़ता है, उसका जो बिहेवियर है उसी तरीके से बनता है जिस तरीके से सोसाइटी या स्कूल या फैमिली में नॉर्म्स होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, आई मीन टू से यू ओवरऑल कल्चर होगा. And likewise, the group influences the individual. Same is the case with the individuality. Individual alone also affects the group. जो पावर एक ग्रुप में होता है वही पावर एक इंडिविजुअल में भी होता है. एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का भी असर, उसके बिहेवियर का भी असर दूसरों पे पड़ता है, आई मीन टू से यू ग्रुप पे पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्राइमरी ग्रुप की बात लेंगे, प्राइमरी ग्रुप मीन्स द फैमिली. फैमिली में हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो फैमिली में होता है कि उसकी पर्सनैलिटी का असर, उसके बिहेवियर का असर कि दूसरों पे पड़ता है, आई मीन टू से जो भी वहाँ पर फैमिली मेंबर है, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट का असर उन पे पड़ता है. वो उसी तरीके से अपने आप में बिहेवियरल चेंजेस लाते हैं जिस तरीके से उनके घर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है. या इसके बगैर वी कैन कोट द अदर इन्यूमरस एग्जाम्पल्स लाइक सपोर्ट्स कोच होता है, यानी चाहे वो सपोर्ट्स कोच फुटबॉल टीम का होगा, क्रिकेट टीम का होगा, बास्केटबॉल टीम का होगा, वॉलीबॉल टीम का होगा. एक सपोर्ट्स कोच से उसका असर डायरेक्टली प्लेयर्स पे पड़ता है. एंड सेम इज द केस विद एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन कि हाउ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हाउ स्कूल प्रिंसिपल, हाउ पर्टिकुलर हेड affects the other faculty members or staff members. या किंगडम में एक किंग का असर, जो किंगडम में लोग रहने वाले हैं उसकी पर्सोना का असर उन पे कैसे पड़ता है. नंबर 4, क्लिनिकल साइकोलॉजी. क्लिनिकल psychology is the branch of applied psychology which deals to study mental illnesses, abnormal behavior, psychiatric problems and their treatment. Dear students, it was actually one of the eminent clinical psychologists who first coined the term clinical psychology. His name is Whitmer, and he coined the clinical psychology term in 1907. And apart from Whitmer, we cannot forget the by and large contribution of Sigmund Freud. Sigmund Freud has contributed a lot how to deal with the mental and emotional disorders, how we treat the various abnormalities which are pertaining by the patient. He was basically Austrian psychologist. Dear students, during the World War II, the world felt the need of clinical psychologists in order to treat one of the disorder that is known as PTSD. The full form of PTSD is post-traumatic stress disorder. The post-traumatic stress disorder is also known as shell shock. और इस शेल शॉक को ठीक करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स की ज़रूरत पड़ गई है. जो ये PTSD है ये पहले सोल्जर्स में पाया गया, और मेजर सिम्टम्स फाउंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर इन द सोल्जर्स वर नाइटमेयर्स, फैटिग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी and other types of mental convulsions possessed by the victims during the World War II. Dear students, as we know that during World War II, round about 85 million people died. Number 5, educational psychology. Dear students, educational psychology is that branch of applied psychology which deals to study the teaching learning process.
Dear students, if we have to make the teaching learning process effective and productive, there is the great role or vital role performed by the psychology, because we use the psychological principles, psychological methods in the field of education. I mean to say you in the field of teaching learning process in order to make the teaching learning process effective, better and productive. If we have to solve the problems of education, especially the problems of teaching learning process, we have to now treat these problems under the shade of educational psychology. And apart from the educational psychology, there is another branch of psychology which is known as differential psychology. Differential psychology is that branch of applied psychology which deals to study the individual differences. We are different in terms of temperaments. We are different in terms of sentiments. We are different in terms of tastes. We are different in terms of capacities and capabilities. We are different in terms of attitude and aptitude. I mean to say you in all respects we are different. एक टीचर के पास डिफरेंशियल साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए. अगर एक टीचर के पास डिफरेंशियल साइकोलॉजी की नॉलेज ना होगी तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं जान सकता है. द टीचर कैन नॉट ट्रूली टीच टू द स्टूडेंट्स. टीचर कैन नॉट channelize the capacities and abilities of the students in a right direction without having the knowledge about differential psychology. Before concluding the lecture, dear students, there are other innumerous branches of, I mean to say you, psychology. These are like parapsychology, industrial psychology, legal psychology, military psychology, political psychology, experimental psychology, child psychology, support psychology, by and large health psychology, so on and so forth. Dear students, if you really enjoyed the lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.